Hello everyone, I hope you all are doing well. In today's video, we will discuss transpiration in plants. Let's start with the structure of leaf. In most plants, leaf base, petiole and lamina एक लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं. लीफ बेस स्टेम का वो एरिया होता है जहां से लीफ स्टेम से अटैच होती है. अनदर पार्ट इज पेट्यूल. पेट्यूल एक स्टॉक होती है जो कि लेमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करती है. एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज लेमिना. लीफ का ये फ्लैट रीजन होता है विच कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, वेन्स एंड स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि वाटर लॉस, ऑक्सीजन रिलीज एंड CO2 इनटेक को रेगुलेट करती है. और वेन्स का क्या फंक्शन है? वेन्स लीफ को सपोर्ट और एक शेप प्रोवाइड करती है एंड दे कैरी वाटर एंड फूड टू एंड फ्रॉम द लीव्स. एक्चुअली वेन्स क्या होती हैं? वेन्स आर लाइक पाइप्स जिसमें 2 डिफरेंट टाइप्स की ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करती है एंड फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स. और इस वीडियो में हम सिर्फ जाइलम पर फोकस करेंगे. नाउ फंक्शन ऑफ लीफ. लीफ कैरीज आउट 2 मेन फंक्शंस, ट्रांसपिरेशन एंड सेकेंड इज फोटोसिंथेसिस. Now, let's start with transpiration. Transpiration is the evaporative loss of water by plants. और ये plants में क्यों होता है, कैसे होता है, we will discuss later. Now, types of transpiration. On the basis of the site through which plants give out water in the form of vapor, transpiration is of following types: lenticular type, cuticular type, stomatal type and bark type. Lenticular type transpiration plants में 0.1% होता है. क्यूटिकुलर टाइप 5 to 10% होता है, स्टोमेटल टाइप 85 to 90% and bark type 6 to 11%. All 4 types of transpiration are responsible for the cooling of plants. We will discuss only stomatal transpiration because transpiration occurs mainly through the stomata in the leaves. और जो स्टोमेटा है वो ज़्यादातर लीफ के अंडर साइड प्रेजेंट होते हैं. और स्टोमेटा होते क्या है? The stomata are tiny openings found in the epidermis of leaves, stems and other organs. And the single one is known as stoma. Normally stomata are open in the daytime and closed during the night. Now function of stomata. Stomata are involved in the gas exchange between plants and the atmosphere. And what is the structure of stoma? The stomatal pore is bordered by a pair of specialized parenchyma cells known as guard cells, which are responsible for regulating the size of opening. The inner wall of the guard cell is thicker than the outer wall. Now we will discuss process of transpiration. First, water absorbed by the roots, then water conducted to the upper parts of the plant through xylem. And we have already discussed xylem cells are pipe-like structure which transport water and minerals. In plants, only a small amount of water taken up by the roots is used for growth and metabolism, and the remaining water, approx 99% water, is lost by the transpiration. Now, let's discuss mechanism of transpiration. Water enters the root from the soil by osmosis. Osmosis क्या है? Osmosis एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एरिया ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर रूट के आउटसाइड वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू इनसाइड द रूट, तो वाटर सॉइल से रूट के अंदर ट्रेवल करता है. Then, the forces of cohesion and adhesion cause the water molecules to form a continuous column in the xylem. Cohesion और adhesion जो है वो water की physical properties होती हैं. Cohesion की वजह से water molecules एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और adhesion means the ability to stick to something, और यहाँ पर water molecules xylem wall से stick रहते हैं. After that, water moves from the xylem into the mesophyll cells, evaporates from their surface and goes out through the stomata by diffusion. Diffusion क्या है? Diffusion is the movement of molecules from a region of higher concentration to the region of lower concentration. और यहाँ पर water molecules leaves के अंदर ज़्यादा है comparatively to outside. So the water vapors move out of the leaf through the stomata by diffusion. In this slide, we will discuss what force does a plant use to move water molecules into the leaf and to the other part. It's transpiration pull. Water evaporates through the stomata of leaves. As a water molecules evaporates from the surface of the leaf, it pulls on the adjacent one due to the tendency of water molecules to remain joined, that is cohesion.
This produces a continuous flow of water throughout the plant, which is known as transpiration pull. अगर मैं इसको समराइज करूं तो ट्रांसपिरेशन पुल और सक्शन फोर्स वो फोर्स है जिसकी वजह से वाटर रूट से लीव्स तक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। और ये फोर्स कैसे क्रिएट होता है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज कोहेजन, मींस एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टे टुगेदर। So as the water is lost from the leaf surface by transpiration, more water molecules are pulled up. Why? Due to the tendency of water molecules to remain joined, that is cohesion, जिसकी वजह से continuous column produce होता है water का through the stem and which is known as transpiration pull. In this slide, we will discuss factors affecting rate of transpiration. Light affects size of stomatal opening, so presence of light increases rate of transpiration, and in dark, due to closure of stomata, rate of transpiration decreases. Then humidity. Humidity decreases the rate of transpiration. Humidity क्या होती है? Humidity refers to the amount of water vapors present in the air. During transpiration, water vapor diffuse from the intercellular spaces of the leaves to the outer atmosphere through stomata. और अगर वाटर वेपर्स आउटर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हैं तो क्या होगा? डिफ्यूजन कम होगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। नाउ टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन, दस ट्रांसपिरेशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेज. एंड लास्ट, विंड स्पीड. If the air is moving, rate of transpiration increases. And why? Because during a windy day, moist air around the leaf is blown away, जिसकी वजह से एयर लेस ह्यूमिड हो जाती है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाता है. नाउ वी विल डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ascent of sap. Ascent of sap is the upward movement of water and minerals from the roots to the aerial parts of the plant. Transpiration cools the surface of the leaf. By taking up the heat and converting the water to water vapor, transpiration helps in reducing the temperature of the leaf. Transpiration removes excess of water. It creates transpiration pull for transport of water. By creating a transpiration pull, transpiration maintains a continuous water supply to the top of the plant. We have already discussed transpiration pull is a force that works against the direction of gravity in plants due to the constant process of transpiration. Transpiration maintains optimum turgor pressure. Transpiration keeps the cell turgid, hence maintains their shape for healthy and normal growth. Can we see stomata with naked eyes? No, but we can see the gas which comes out as a bubble through the stomata. Let's have a look. To see the presence of stomata, place a fresh leaf in a pot containing hot water. Look over here, you can observe some bubbles emerging from the leaf surface. And it happens because when we place a leaf into a hot water, air inside the leaf expands and come out as bubbles through the stomata. I hope transpiration in plants is clear to you all. Thanks for watching and take care.